गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ पार्ट 1, इसका चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। आज है 6 जुलाई 2026 और कल की क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था द मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम। इसी टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे और इसके बाद में फिर हम आगे का टॉपिक देखेंगे। तो आपका पेज नंबर 73 पे क्वेश्चन है फिगर इट आउट। इसको हम करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारा मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम क्या था। एक्चुअली इसमें क्या सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, हमको प्लेस वैल्यू का सिग्निफिकेंस दिया हुआ है। ठीक है, इससे पहले हमने जो सिस्टम पढ़ा था वो पढ़ा था हमने इजिप्ट सिस्टम। इजिप्ट सिस्टम में हमारी एक प्रॉब्लम आई थी। इजिप्ट सिस्टम में हमारी प्रॉब्लम आई थी अनएंडिंग की, कि अनएंडिंग की प्रॉब्लम आई थी। मींस हमारा एंडिंग नहीं हो रहा था कि हम बड़े से नंबर का हमको एक सिंबल बनाना पड़ता, और कोई भी हमको एक बड़ा नंबर मिलता बेस का तो हमें उसका एक सिंबल बनाना पड़ता। इस तरीके से हमारे पास में n नंबर ऑफ सिंबल्स होते और उनकी भी कोई एंडिंग नहीं थी। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए एवोल्यूशन हुआ नंबर सिस्टम का। उसमें हमने देखा प्लेस वैल्यू। ये प्लेस वैल्यू सिस्टम किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ इसको हम देखेंगे। तो मेसोपोटामियन सिस्टम में हमने पढ़ा था कि उन्होंने प्लेस की वैल्यू रखना स्टार्ट कर दिया। मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम हमारा था बेस्ड 60 पे। ठीक है, ये इसका बेस था। ठीक है, तो इसी से हमारी इसके पावर्स आई थी 60 रेज टू द पावर 1, 60 रेज टू द पावर 2, 60 रेज टू द पावर 3। लाइकवाइज हमने देखा था कि हम ये हमारे लैंडमार्क्स आए थे, तो हमने देखा था कि हमने हर लैंडमार्क का एक डिफरेंट सिंबल नहीं बनाया था। हमने हर लैंडमार्क का एक डिफरेंट सिंबल नहीं बनाया था, हमने एक कॉमन सिंबल बना दिया था कि ये 60 रेज टू द पावर 0 का हमारा सिंबल था लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद में जैसे 60 रेज टू द पावर 1 था उसका हमने सिंबल ऐसे बना दिया था, दिस इज 1, दिस इज 60 रेज टू द पावर 2, दिस इज 60 रेज टू द पावर 3। ठीक है, बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी थी 60, इसकी वैल्यू कितनी थी 3600, इसकी वैल्यू कितनी थी 21600। अंडरस्टूड। तो ये ऐसे सो ऑन, मतलब नेक्स्ट हमारा आएगा 60 रेज टू द पावर 4 विच विल बी रिप्रेजेंट लाइक दिस। तो हमने क्या देखा कि हमने हर लैंडमार्क का एक डिफरेंट सिंबल ना होके हमने एक कॉमन सिंबल बना दिया। ठीक है, जिससे और वो उसकी प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। पर हमने जो मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में उसके क्या कमी थी उसको हम देखेंगे कि बेसिकली ये जो हमने सिंबल बनाया है ये उनका मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट था। मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट था कि उनको जो प्लेस वैल्यू है, जो पर्टिकुलर प्लेस वैल्यू है उसको वो ब्लैंक छोड़ते थे। ये सिंबल हमने बनाया है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। दीज सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय द मेसोपोटामियन नंबर्स बट दीज आर गिवन for the reference in your NCERT book. Understood? So what I am saying that कि ये जो प्लेस वैल्यू थी किसी भी पर्टिकुलर नंबर में ये वो ब्लैंक छोड़ते थे, ये वो ब्लैंक छोड़ते थे। इसका हमने एक एग्जांपल देखा था, एक नंबर था उसका एग्जांपल हमने देखा था। सी, और इसमें हमारा एक और था कि हम जो 10 को हम यू रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 10 एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एंड दिस इज 1। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि हमने एक नंबर देखा था 7530, एक नंबर था हमारा 7530। अंडरस्टूड? ये हमारा नंबर था। इस नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया था लाइक दिस। अंडरस्टूड? ये नंबर हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ था, जिसमें ये जो सिंबल है, ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए लिया हुआ है। अदरवाइज जो मेसोपोटामियन थे वो इसको क्या करते थे, वो इसको ब्लैंक छोड़ते थे। ठीक है? एंड दिस इज अंडरस्टूड कि इस ब्लैंक के बाद में ये जो ब्लैंक आएगा उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा 3600 को। ठीक है? और जो पहला ब्लैंक आएगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट, 60। इस तरीके से जो नेक्स्ट ब्लैंक आएगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग योर 60⁻3। बट तो आप समझ सकते हैं कि ये प्लेस वैल्यू पे ये 3600 की प्लेस वैल्यू फिक्स कर दी, ये 60 की प्लेस वैल्यू फिक्स कर दी, और इस ये बेस 60 है और इसकी प्लेस 60⁻1 की प्लेस वैल्यू फिक्स कर दी, ये बेस 60 पे 60⁻2 की प्लेस वैल्यू फिक्स कर दी। इस तरीके से हम मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में नंबर लिखते थे और वो इस गैप को ब्लैंक छोड़ते थे। ठीक है? और ओनली ये सिंबल लिखते थे। इन सिंबल से हमको गैस करना पड़ता था कि ये नंबर क्या है, बिकॉज यहाँ पे गैप है। अब इस गैप की वजह से क्या हुआ ये हम समझेंगे। इस गैप की वजह से क्या हुआ ये हम समझेंगे कि बेसिकली हम देखते हैं कि ये जो गैप है, ये इस गैप में कौन सा सिंबल आएगा ये हम पता नहीं कर पा रहे हैं। अंडरस्टूड? ये हम कैसे नहीं पता कर पा रहे हैं कि जैसे मैं आपको बताता हूं कि देखिए, जैसे एक नंबर लिखा है मैंने, वेट, डस्टर से रब करने के बाद में मार्कर ठीक नीचे होता है। ओके, एक नंबर लिखा है हमने 12। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी, ये हमारा 10 है एंड दिस इज आवर अंडरस्टूड, दिस इज आवर 1 and 1. This is our 12. Understood? Now the next number is 602. Now see, this number is 602. अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको आप स्प्लिट करते हैं। जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो ये होगा 10 × 60 + 2। ठीक है? क्योंकि हमारा बेस 60 है मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में। अब हम इसको देखेंगे कि ये जो 60 है इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, ये 10 है इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हमने ये इसको 10 को रिप्रेजेंट कर दिया, और 60 को जैसा कि हमने जो हमारी एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रही है इसमें हमने इस सिंबल को ये लिख दिया। ठीक है? एंड ये हमने मार्क बना दिए। ठीक है? इस मार्क से आपको समझ में आ गया कि ये हमारा हो गया 602। अब आप देखिए 602 है, सिंस मेसोपोटामियन नंबर में ये ओनली दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लैंक, मींस गैप। ये गैप से रिप्रेजेंट किया जाता था। अब इस गैप से रिप्रेजेंट किया जाता था, तो अब आप देखेंगे कि द सिंबल ऑफ 12 एंड द सिंबल ऑफ 602 इज सेम, ओनली व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट it is represented by a gap. Understood? So it is very difficult to understand. The gap is not always equal. कभी
किसी में ये गैप थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, किसी में ये गैप थोड़ा सा कम कर दिया, तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि whether this number is representing the 12 or this number is representing the 602. Let's take one more example. What is the another example? This is 36002. ठीक है, इस नंबर को आप कैसे लिखेंगे? इसको मैं मिटा देता हूं। 36002 ये आपका क्या है? आप देखेंगे कि दिस इज 1 into 360. Okay, what is the number actually? Let's see. Yes. So what we can see that this is actually 10 into 3600 plus 2. ये हमारा नंबर है। अंडरस्टूड? ये हमारा नंबर है। अब इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे? इस 10 का सिंबल हमारा क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ 10। इसके बाद में ये 360 को कैसे लिखेंगे? ये जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं यहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ। अंडरस्टूड? अब ये 1 को कैसे ये जो 2 है इसको कैसे लिखेंगे? लाइक दिस। नाउ सी, दिस इज द सिंबल विच इज रिप्रेजेंटिंग 36,002. नाउ since Mesopotamians were representing this by a gap, understood? Now this gap, now you see, now can you recognize this gap and this gap, what both gap are representing without seeing this number and without seeing this number? What you can thought? See, no, someone can think of this as a gap, as a this landmark 1, or someone of you can think that this is this landmark, or someone may think that this is this landmark. So now you can find out a difficult, and also here is the same. Now you can see 3602, 12 and 602, they are represented by the same symbols. The difference is only the gap, and that gap is also not always even, and it is not giving the clear picture that which landmark number which you have to place between them. Understood? So we have understood this is actually the place value of the landmark, but since Mesopotamian has number system has kept it blank, so this become difficult. So now they understood the significance of the place value. They understood the significance of the place value, and they have removed the shortcoming of the Egyptian number of unending symbols. Understood? The problem what Egyptians number system is facing, that they have unending symbols, and that they have sorted out by representing the place value, by representing the landmarks at the place value. Now since they have kept it blank, kept it blank, so what is in this place value, which landmark will come in this place value, is the become the disadvantage of the Mesopotamian number system, which is explained in your book. ठीक है? I will read it, and you try to understand. See, the Mesopotamian number system removes the need of generating the unending sequence of the symbols. Means जो unending सिंबल्स की रिक्वायरमेंट थी इजिप्टियन नंबर सिस्टम में, वो मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम ने रिमूव कर दी। ठीक है? जो कि हम लैंडमार्क के लिए यूज करते थे। अंडरस्टूड? एंड व्हाट दे आर डन, दे आर पोजिशनिंग द लैंडमार्क्स, they are positioning the landmarks, and positioning of landmark system is called position number system. ठीक है? This is called position and place value system. मतलब आप लैंडमार्क की पोजिशनिंग कर रहे हैं या लैंडमार्क को प्लेस कर रहे हैं, सो दैट दिस इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू सिस्टम और पोजिशनल नंबर सिस्टम. ठीक है? द आइडिया ऑफ प्लेस वैल्यू मार्क्स द हाईएस्ट पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द नंबर सिस्टम, and this idea is become the greatest of the change
in the number system and gives a very elegant solution to the problems of representing the unending sequence of numbers using only the finite number of different symbols. Means now इन्होंने जो unending number of symbols जो हम यूज करते थे इजिप्टियन नंबर सिस्टम में, now they are converted into the finite number of symbols. Understood? Now they have converted into the finite number of symbols. The Mesopotamian system cannot be considered fully developed. Now this system is not fully developed, and why this system is not fully developed, that we have discussed in this example, that different numbers can be represented by the different numbers are represented by the same symbols, and this is the drawback of the Mesopotamian number system. Understood? So to overcome this, what they have done, they have started using the blank space by a different symbol. What is that symbol? This is the symbol. Now they have started using this symbol in the blanks, like जैसे यहाँ पे हमने ये लगा दिया, यहाँ पे ये सिंबल बना दिया. They have started using this symbol in the blanks. See, let me read. Because of the ambiguity in finding which symbol correspond to the which corresponding power of the 60, the same numeral can be read in the different ways, which we have seen. The same numeral can be read in the different ways. Thus, even in our representation, which uses the uniform spacing between the symbols for the different power of 60, it is difficult to know the number blank between the two sets of the symbol, as in the representation of this. Same what I have explained, they have written the same thing. Actually, I have explained on the basis of what is written in your book. And to address this issue, what of the blank space, ये जो इशू था ब्लैंक स्पेस का, इसको उन्होंने किस तरीके से किया, वहाँ उन्होंने उस प्लेस पे एक सिंबल लिखना स्टार्ट कर दिया है. एंड व्हाट इज दैट सिंबल? दिस इज द सिंबल विच दे हैव यूज्ड फॉर द ब्लैंक स्पेस. ठीक है. इसके बाद में भी इसमें प्रॉब्लम्स होती थी. क्या प्रॉब्लम्स होती थी? कि प्लेस होल्डर वाज प्राइमरीली यूज इन द मिडिल नंबर्स, नॉट इन द एंड. ठीक है. जो हम प्लेस लिखते थे वो हम नंबर के मिडिल में लिखते थे. ठीक है, नंबर के मिडिल में लिखते थे. तो इससे क्या होता था कि हमको उसके राइट साइड का कौन सा नंबर लेना है, उसके लेफ्ट साइड का कौन सा नंबर लेना है, ये हमको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता था. मीन्स इसके आगे भी अगर कोई सिंबल होगा, सपोज इसके आगे एक सिंबल होता है, दिस सिंबल वी केम अगेन, अंडरस्टूड, विद अ गैप ऑफ दिस, एंड इट इज सी if we have make another gap here and we have written a symbol like this, then it is very difficult to understand that whether this multiple of this landmark is included here, or this is included here, or this is including in this. It was difficult to find out. Like we have seen, we can see, if I ask you, since they are representing the gap like this, now if I ask you to represent 60, if I ask you to represent 60, how will you represent 60? Since 60, this 60 is represented by a gap, how will you represent 60? How will you represent the landmarks? This next landmark, this is represented by actually gap. Then how will you exactly represent this number? It is not. This is the drawback of this Mesopotamian number system. How will you represent this number? Since this is a landmark number and it is represented by a gap, then how will you write this number? Understood? Since this base is represented by a gap, then how will you? And these all are represented by a gap only. Understood? So these are the some difficulties. दो हमने गैप के लिए एक सिंबल बना दिया था,
हमने गैप के लिए कौन सा सिंबल बना दिया था, ये वाला. Mesopotamian were start using the symbol instead of gap, this symbol, but even then there is no representation of these numbers, there is no representation of landmarks. Understood? To overcome this, we'll see the next number system. What is the next number system? The Mayan number system. Let's understand what is Mayan number system. Before moving to the next topic, Mayan number system, let's do some exercises which are given on your page number 73, that you have to convert the few numbers into the Mesopotamian number system. And the number one is, you have to represent 63 in the Mesopotamian number system. How will you represent this number system? You split it 60 plus 3. Understood? And this will be represented by, since this symbol we are using, this symbol we are using in our textbook as per Ncert book. So this is representing the 63. Actually Mesopotamian were using this as a gap. Understood? Now next number is 132. How will you write this number as 132? This is the multiple of 60. Let's see. 2 into 60. ये आपका कितना हो गया 120. इसके बाद में आपका कितना बचा 12. मीन्स 10 प्लस 2. इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये हो गया हमारा 120. ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया हमारा 2. नाउ सी, एक्चुअली this is this together is representing that we are using this landmark twice, and the twice of this is 120. Then this is represented by the this symbol which is of 10, and this 2 is represented by the these symbols. Understood? Let's move to the next. थर्ड वन क्या है? 200. Now 200 is multiple of 180. Understood? 3 into 60. This is 180 plus 20. Plus 20 means 10 plus 10. This is our 200. And how will you represent this? This 3 is represented by this symbol. 1, 2, 3. Means our 60 is 3 times. And this 10 is 2 times. This is the representation of 200. Understood? Now 60. How will you represent the 60? 1. Understood? This is the representation of 60. फिफ्थ क्या है हमारा? फिफ्थ है हमारा 3605. 3605. ये क्या है हमारा? 36 कितने टाइम्स है हमारा इसमें? 1 टाइम्स है. अंडरस्टूड? मीन्स plus 5. How will this represent as?
2 and 5 times. This is what? These are 3605. Understood? So these are the few numbers which are given in your textbook for exercise. Now we will move to the next topic. That next topic is the Mayan number system. Now we will study the Mayan number system, right? What the disadvantage or what the shortcomings we have in the Mesopotamian number system, that we will see how that problem is removed in Mayan number system. Now, let me read about this. In Central America, there flourished a civilization known as Mayan civilization that made a great intellectual and the cultural progress between the 3rd and the 10th centuries. Among their intellectual achievements stands their place value system designed independently of those in Asia. They also use the placeholder symbol for the modern day zero that looked like a seashell. Understood? So basically, they have started the place value system, and like in today's, we are using a zero symbol in our number system. The way they are also using some symbol which is representing the zero, and that is what a seashell. Understood? Now let's understand the Mayan number system. The Mayan number system is almost of base 20. Understood? We have seen the base of the system as in Egyptian system, the 10. We have seen the base of 5, and we have seen the base of 7 also, and we have seen the Mesopotamian number with the base of 60. Now they have taken the base 20 but not completely 20. How? That we will see. What are their landmarks? मायन नंबर सिस्टम के लैंडमार्क्स क्या थे? लैंडमार्क्स क्या थे इनके? विल सी. ये वन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? दे रिप्रेजेंट द वन बाय सी these let's see what are their landmarks. 1, 20. Understood? Now next what we should have? We should have the 20 raised to the power 2. Understood? No, but what they are using, 20 into 18. Understood? The next, and what next they are using? They are using 20 square into 18, right? They are using like this, and your next number will be 20 cube into 18. Now this is a puzzle that why they are using this. Understood? So what the numbers comes out? This is 1,
and this is 20, and this 20 into 80, 360, and then 400 into 18. 400 into 18 will be our 3, 6. Understood? Sorry. This is actually power. So 18 into 4. 18 into 4 we have to write, and what will it come? It will become 72. And what will be our next number? 18 into 8. Sorry, we have also written here 2 raised to the power 3, which is actually 20 raised to the power 3. Now next will be our 144. 18 8 is 144, and how many zeros we have? 1, 2, 3. Likewise, these are the our landmarks. Landmark 1, landmark 2, 200, landmark 3, 360, landmark 4, 72000, and landmark 5, 144,000. Understood? Means 1,44,000. Now what the symbol they have used to represent 0? 0 को किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे थे? वो एक शेल से रिप्रेजेंट कर रहे थे. एक शेल है ये, ठीक है. दिस इज अ शेल. दे आर रिप्रेजेंटिंग 0. और 1 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? हाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग? दे आर रिप्रेजेंटिंग 1 एज ए डॉट. अ डॉट, ठीक है. शेल dot. Understood? Then and they are representing 5. They are representing 5 as a horizontal line. Basically this horizontal line is your 5. ठीक है. और ये जो इनके लैंडमार्क्स थे, हम अभी तक जितने भी नंबर सिस्टम थे, वी आर राइटिंग ऑल द लैंडमार्क्स इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म, बट इन द मायन नंबर सिस्टम दे आर रिप्रेजेंटिंग द लैंडमार्क्स इन वर्टिकल फॉर्म. लार्जर वन एट द टॉप and smaller one or the least one at the bottom. Understood? You have seen the least landmark 120, 360, 722,000 and 1,44,000. Now we will see how they are representing the landmarks. Mayan system कैसे landmarks represent करते थे? Vertically. Vertically means suppose okay, like this 144. This is one landmark. उसके नीचे दूसरा लैंडमार्क था हमारा 72,000, then 360, then 20, then 1 and 0. Like this the Mayan number system was represented, and the symbol for 0 is seashell, for 1 is dot, and for 5 is bar, and so on. Now we will see. We will see how 1 to 19 numbers are represented. Understood? So that we will have idea. 0 is represented by a seashell. Now 1
Give me a minute. Now we'll see. Now this 1 is represented by a single dot, 2 is represented by a double dot, and 3 is represented by a 3 dot, and 4 is represented by a 4 dot. Understood? And 5 is represented by a horizontal line. Right? इसको मैं एरो बना देता हूँ so that you will not confuse. 5 is represented by a horizontal line. Then your 6 will represented by a one horizontal line and one dot. Understood? And your 7 is represented by a one horizontal line and two dot. Understood? And your 8 is represented by a one horizontal line and three dots. And your 9 is represented by a one horizontal line and how many dots? 4 dots. And your 10 is represented by a two horizontal line. Understood? Then 11, two horizontal line and one dot. 12, two horizontal line and two dot. Then 13, two horizontal line and three dot. And 14, two horizontal line and four dots. Understood? And your 15 will be represented by a three horizontal lines. And 16 is represented by a three horizontal line and single dot. And 17 is represented by a three horizontal line and two dots. 18 is represented by a three horizontal line and three dots. And 19 is represented by a three horizontal line and four dots. Now see, now how we will represent the 20. Understood? That we have to see. Now since we have seen that we are representing the Mayan number system in vertical form, so we have layers. What we have? We have layers. Now we can remove this symbol. Layers means एक हमारा 1 का लेयर था जो कि हमारा A1 से लेके 20 तक था. फिर हमारा 20 का लेयर है. ठीक है. 20 के बाद में हमारा 360 का लेयर है. उसके बाद में हमारा 72 एंड सो ऑन. अंडरस्टूड? तो हम देखेंगे कि 19 के बाद में जो 20 आएगा हमारा, वो 20 कैसे आएगा? यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे. तो दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? 20. ठीक है. मीन्स दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग 20. और अगर हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, इसका मतलब क्या हो गया? 5 into 20 दैट इज 100. ठीक है. अगर हमने यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 into 20 मीन्स 200. अगर हमने यहाँ पे तीन हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी तो इसका मतलब क्या हो गया? 15 into 20 मीन्स 300.
और इस पे हमने अगर एक डॉट लगा दिया तो मीन्स 31 इन 16 इंटू 20 मीन्स 320. Understood? So this is the way, like if we put one dot here means 360 is one time. If we put one horizontal line here means 360 is 5 times. If we put two horizontal line, it means 360 is 10 times. If we put three dots here means this is 13. So 360 is 13 times. Understood? So let's convert one number. Here the example is 1660. We'll convert. We have seen how you will move this. After 20 you will shift to the next. Understood? Let's represent 1660. Now we will split this number. How many times 360 is coming in this? We'll see. 360, 720, and 720 is double 14, 40. Understood? Now 1440 we have seen that how we will split 4 into 360. Understood? 4 into 360, which is our actually 1440. ठीक है, 1440 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 220. Now we will split the 220 also. How will you split the 220? Now 220 will be splitted by the 20. 20 means 20 into 11 means 11 into 20. So this is that's all. This is all our number, and you will see how we will represent this. See, we have 4 dots in 360. 1, 2, 3, and 4, and 11 dots in 20. How we will represent the 11 dots? Two horizontal line is representing the 10, and one dot is representing the 1, and this is combined 11. So this is our number. 1660 is represented by in Mayan system like this. Understood? Let's say one more example. You can keep here 6. Now how you will represent the 6? 5 plus 1, and this will come where? In this, since we are doing in a vertical form. How we will represent the 6? One horizontal line and one dot. This is 6. So in this way we have represented this number. So you have learned how we will represent the number in the Mayan system, and these are the place values. These are the place values. These are the landmarks, and they are represented in the vertical system with the place values. Understood? Some exercises are given. Let's represent these numbers. $77. How we will represent the 77? How we will split it?
दिस इज 3 इंटू 20, ये कितना हो गया हमारा 60, और कितना बचा 17, कितना बचा हमारा 17। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 3 इंटू 20 मीन्स 3 डॉट्स, 1 2 and 3, and what is this 17? 17 means 3 horizontal line, 1 2 3। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूं so that कि you will not confuse। Understood? ठीक है, now this is your 15 and 2 dot is 17। Understood? Now this is our 77। What is the next number? Next number is 100। How will you split it according to this number system? 5 into 20। Understood? 5 into 20 आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? You have to simply draw a horizontal line। This is your 100। Understood? A single horizontal line here is representing your 100। Understood? Now see, this is your blank, this is your blank. How will you ensure this place value? Since we have written here the landmarks, if these landmarks are not written here, then how will you understand that this horizontal line symbol is actually 100 or 5? How? We will draw a shell here, we will draw a shell here, seashell, means there is nothing here, at this place there is nothing। Understood? This is actually our 100। Now what is the next number? Next number is 361। 361, what is our landmark? This means 360 plus 1। How we will represent this? Now see, this one is represented by the single dot here, and this 360 is also 1 times, this is represented by a single dot here। Now when only there these 2 dots, how will you see? This is the blank space, which difficulty we are finding, we find in Mesopotamian number system। Now this blank is, you will cover this blank by a seashell symbol, means there is nothing here and there is a gap of this, and we have placed we have filled this place value, and this is your 361। Understood? नेक्स्ट क्या है आपका? फोर्थ क्या है? नंबर 721। 721 इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? 2 इंटू 360 प्लस 1। सेम, नाउ वी विल रिप्रेजेंट द 720। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 डॉट्स हैं 360 के लिए, 1 and 2, और 1 के लिए 1 डॉट है और ये खाली है, तो इसमें हम शेल का सिंबल बना देंगे। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ शेल and this is the way we have represented the number 720। Now you have seen how the place value is useful, and it is giving us the clear information that the place value where there is nothing, we made a symbol, and in today's place value number system, what we are using instead of this symbol, we are using 0। Understood? That we will study in next class, that we will in the next coming classes। So this is the today's topic। We have studied about the Mayan number system, and in the next class we will study about the Chinese number system। Till then, take care and thank you very much।